Hello and welcome back to Shorthand Pro. I'm John, and today in this video I'll provide you three dictations. जैसे कि आप सबको पता है कि जो हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन आई है, हमारे एग्जाम्स जल्दी से कंडक्ट होने वाले हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 8 ऑफ सितंबर 2025 से जम्मू डिवीजन के लिए, और कश्मीर डिवीजन के लिए शुरू हो रहे हैं 22 ऑफ सितंबर 2025 से। सो वी आर हियर टू प्रोवाइड यू द डिक्टेशंस फॉर दीज एग्जाम्स। जब तक ये हमारी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे तब तक हम आपको डिक्टेशंस प्रोवाइड कर देंगे। और डिक्टेशंस जो हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि मिक्स्ड मैटर ज्यादा आने के चांसेस होते हैं और लीगल वर्ड्स के भी चांसेस होते हैं। जो मिक्स्ड मैटर वाली डिक्टेशंस होती है, तो हाई कोर्ट का यही मानना होता है कि जो हमारे स्टेनोग्राफर्स होने चाहिए वो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टेनोग्राफर्स होने चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो एक पैरा कोई न्यूज में डाल देते हैं, दूसरा पैरा लीगल वाला डालते हैं, और तीसरा पैरा वो जनरल वाली डिक्टेशन डालते हैं, तो ताकि आप फिर वो कॉपी ना कर पाओ। आपको अगर दो लाइनें टाइप करोगे इंटरनेट से तो फिर आप वो पूरी डिक्टेशन नहीं निकल सकती है। इसलिए उनका मकसद यही होता है कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स हो, हमारे जो ये कैंडिडेट्स होने चाहिए स्टेनोग्राफर्स, वो बेस्ट से बेस्ट होने चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे इनके लिए डिक्टेशंस, रेगुलरली प्रोवाइड करेंगे हमारी लाइव सेशन में। तो हमारा ज्यादा फोकस होगा मिक्स्ड मैटर का भी और लीगल वर्ड्स के भी। तो आज की डिक्टेशन हम शुरू करेंगे। आज की डिक्टेशन हम पहली वाली डिक्टेशन जो होगी, इट विल बी फॉर 346 वर्ड्स, एंड ये मिक्स्ड मैटर डिक्टेशन होगी। एंड आई विल डिक्टेट इट एट 65 to 70 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होगी इनकी। सो आप सब तैयार रहिए लिखने के लिए। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये टेक्स्ट ठीक से नहीं दिख पाता है, तो आप जो आपकी क्वालिटी है यूट्यूब पे, वो मैक्सिमम रखिए। वो हाई क्वालिटी पे आप सेट करिए, ताकि आप लिखने के साथ साथ इस पे भी नजर दे सकते हो, तो आपको ये इजीली विजिबल हो सकेगा। एंड इसके बावजूद भी मैं इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। मीनवाइल आप स्टार्ट हो जाइए लिखने के लिए। I hope I am clearly audible to everyone. Let's start straight away. ठीक है, हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं सीधे। तो okay, get yourself ready for the dictation. The dictation will start after 5 seconds. Start. A massive wildfire in southern France has ravaged an area roughly the size of Paris, marking the largest blaze the country stopped. The inferno, fueled by intense heat, drought, and dry vegetation, sustained by strong winds, has already claimed one life, injured multiple people, and destroyed dozens of homes. Stop. Officials attribute the fire's unprecedented scale to the calamitous effects of climate change, underscoring the compounding risk of extreme weather events across Europe. Stop. Meanwhile, the ongoing global bleaching event, one of the worst ever recorded, has affected some 84% of coral reefs worldwide, driven by historic rises in ocean temperatures. Stop. Regions across the Mediterranean are confronting compounding
threats exceptional heat waves, comma, like the one that triggered the French wildfires, comma, are being mirrored by massive coral loss and intensifying monsoon floods in Asia. Stop. Let it be recorded in limni that all statutory authorities, comma, administrative bodies, comma, and instrumentalities of the state are hereby directed to abstain from sanctioning or executing any activity that may precipitate environmental degradation or violate the principles of sustainable development. Stop. Any such act shall be deemed ultra vires, their lawful mandate, and contrary to the doctrine of public trust. Stop. Violation of these obligations shall attract judicial scrutiny under the writ jurisdiction of constitutional courts, comma, including mandamus, comma, certiorari, comma, or quo warranto, comma, as applicable. Stop. The precautionary principle, comma, the polluter pays principle, and the doctrine of intergenerational equity is locus classicus in environmental jurisprudence and shall be enforceable ex debito justitia. Stop. Any failure to comply may be construed as contemptus curia and shall invite appropriate directions, comma, interim injunctions, comma, or adverse cost orders from the competent forum, comma, including the Honorable High Courts and the Honorable Supreme Court of India. Stop. Authorities are reminded that delay or dereliction in preventing ecological damage may be subject to suo motu cognizance by constitutional courts under Article 226 and Article 32 of the Constitution. Stop. All such matters shall be dealt with one on a priority basis under the Green Bench protocols and monitored in accordance with orders passed per incurium no longer having binding effect. Stop. Compliance is thus not optional but mandatory sub peona of law. Stop. End of dictation. आई होप सबको डिक्टेशन पसंद आई होगी। अगर डिक्टेशन के रिलेटेड किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप बता सकते हो। उसके बाद हम दूसरी डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। I'll give you 2 minutes to ask me anything. आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो कोई भी सवाल, कोई वर्ड समझ नहीं आता हो, आया होगा या मिसहियर हुआ होगा, वो बता सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। ये पहली डिक्टेशन मिक्स्ड मैटर की थी। इसमें एक तो जनरल लेवल्स थी और ये लीगल वर्ड्स का भी इंप्लीकेशन हुआ है। किसी को कुछ पूछना होगा तो वो बता सकता है। If you want to ask me anything, please ask me in comments. उसके बाद हम दूसरी डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे
किसी को अगर डिक्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सुनने में कोई वर्ड समझ नहीं आता है, तो वो कमेंट्स में बता सकता है। उसके बाद हम दूसरी डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। ये भी बता दीजिएगा क्या मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है? ठीक है। गेट योरसेल्फ रेडी फॉर अनदर डिक्टेशन। दूसरी डिक्टेशन हम स्टार्ट ये देते हैं, 518 वर्ड्स के हैं ये डिक्टेशन। तो ये मैं इसमें तकरीबन 6-7 मिनट का मैं टाइम देता हूँ। इसको मैं इसलिए डिक्टेट करूंगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का जो ये कैपेसिटी है लिखने का, जो आप विद इन टाइम फ्रेम लिखते हो 5 मिनट्स की डिक्टेशन, तो फिर देखना ये है कि आप लोगों का स्टेमिना कैसा होगा। जो ये डिक्टेशन है, ये डिक्टेशन चेक करेगी कि आपका स्टेमिना कैसा है लिखने का। आप सिर्फ 5 मिनट ही लिख पाते हो या उससे ज्यादा लिख पाओगे। तो बेसिकली ये डिक्टेशन इसीलिए 500 वर्ड्स की लाई गई है ताकि आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ जाए, क्योंकि आपको आदत होना चाहिए बियॉन्ड 5 मिनट्स लिखने का भी। जब आपका स्टेमिना बढ़ेगा तभी आप 5 मिनट वाली डिक्टेशन अप्रोप्रिएट और एंड करेक्टली लिखोगे। इसको भी मैं 60 to 70 के आसपास डिक्टेट करूंगा। और ये डिक्टेशन कंप्लीटली है लीगल डिक्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टेशन। इसमें भी बहुत सारे लीगल मैक्सिम्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये डिक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी सबके लिए। सब रेडी रहो लिखने के लिए। ओके। Get yourself ready for the dictation. The dictation will start after 5 seconds. Start. This appeal, comma, preferred by certain landowners, aggrieved parties, comma, impugns the order passed by a learned single judge of the High Court of Delhi, whereby in allowing an application under section 5 of the Limitation Act, 1963, the High Court condoned a delay of 479 days in filing an appeal under section 18 of the Land Acquisition Act, 1894 by the Union of India. Respondent number 1, stop. The sole question in limine is whether the High Court was justified in condoning the delay in filing the appeal. Stop. Corollary, comma, whether the respondent number 1 demonstrated sufficient cause for not presenting the appeal within the prescribed period of limitation. Stop. Pursuant to proceedings for land acquisition, comma, the reference court enhanced compensation to landowners. Stop. The Union of India sought to challenge this decision by filing an appeal before the High Court, comma, albeit delayed by 479 days. Stop. An application for condonation of delay was filed, comma, attributing the delay to interdepartmental correspondence, comma, administrative approvals, comma, and bureaucratic processes, comma, including the misplacement of the certified copy of the reference court's order. Stop. The High Court, comma, upon examining the pleadings and records, comma, found the explanation to be bona fide and accordingly condoned the delay, comma, albeit with imposition of
costs. Stop. Learned senior counsel for the appellants contended that the High Court erred in exercising its discretion under Section 5, as the explanation lacked the essential elementum rationis. Stop. The narrative merely detailed routine administrative steps without demonstrating any exceptional or unavoidable circumstance justifying the inordinate delay. Stop. Reliance was placed on precedents, inter alia, Balwant Singh under bracket dead versus Jagdish Singh and others, and University of Delhi versus Union of India and others, to argue that such habitual procedural delays, unsupported by sufficient cause, ought not to be condoned as a matter of course, lest it results in erosion of judicial discipline and undermines the doctrine of the law, assists those who are vigilant, not those who sleep. Stop. It was further contended that interdepartmental inefficiency cannot be a shield to defeat the statutory limitation, and that the High Court's approach was mechanical, perverse, and contrary to settled law. Stop. Per contra, learned senior counsel for the respondent submitted that the delay was neither deliberate nor contemptuous, but a consequence of institutional delay, a byproduct of the impersonal bureaucratic process inherent to state machinery. Stop. He argued that the High Court had exercised its discretion judiciously, recognizing that public interest would suffer in the event the respondent's challenge was thwarted at the threshold. Stop. Emphasis was laid on the equitable discretion vested in courts to prevent a miscarriage of justice, particularly when negligence was not malified and advocate costs had been imposed. Stop. The delay, it was submitted, stemmed also from the negligence of counsel, whose services were consequently terminated, and such individual lapse should not prejudice the respondent's meritorious claim or result in an exchequer burden through unjust enrichment of claimants. Stop. Accordingly, the appellants seek setting aside of the impugned order and dismissal of the respondent's appeal as barred by limitation. Stop. Conversely, the respondent prays for the present appeal to be dismissed, thereby allowing the High Court to adjudicate the appeal on merits, ex debito justitia. Stop. End of dictation. होप आप सबको डिक्टेशन अच्छी लगी होगी। ये डिक्टेशन लंबी थी, इसमें 518 वर्ड्स थे जिसको हमने 7 मिनट्स के अंदर अंदर डिक्टेट किया है। तो ये था 74 to 76 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड थी इसमें।
So ये dictations both dictations are very important for you to practice on. तो जैसा आप सबको पता है कि हाई कोर्ट में जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो हाई होता है, ठीक है। और इस बार मुझे लगता है ज्यादा ही हाई होगा, एज आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अटेंडिंग एंड कंडक्टिंग द हाई कोर्ट एग्जाम्स। सो आप सब तैयार रहिए इन चीजों के लिए। जो ये मिक्स्ड मैटर होते हैं और लीगल डिक्टेशन होते हैं, इनको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको रेगुलरली एक दिन में या तो सुबह मॉर्निंग में या शाम को इसी टाइम पे रोज रेगुलरली डिक्टेशन प्रोवाइड करूंगा। अगर आप हमारे चैनल से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं लाइव आ जाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मिस ना करो। मीनवाइल किसी को अगर कुछ सवाल होगा, कुछ पूछना होगा तो वो पूछ सकता है। आज के डिक्टेशन के रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा तो वो बता सकता है। किसी को कुछ पूछना है? वीडियो का जो क्वालिटी है वो एचडी पे रखिएगा, ताकि आपको जो ये डिस्प्ले पे टेक्स्ट दिख रहा है ये बड़ी साफ से आपको दिखे। अच्छा, यहाँ पे हमारे एक कैंडिडेट बोल रहे हैं कि लीगल मैक्सिमस का आउटलाइन। ठीक है, जिसको आउटलाइन में कोई तक प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, आपको टेलीग्राम ग्रुप में वो बता दिया जाएगा। जो जो आपको डिफिकल्ट लगता है आउटलाइन बनानी, तो उनकी आपको टेलीग्राम में बना के दिया जाएगा। ठीक है, आप जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो डिक्टेशन है इनमें मैक्सिमम जो लीगल वर्ड्स हैं, लीगल मैक्सिम्स होते हैं, तो ये काफी डिफिकल्ट होते हैं। तो इनकी लीगल आउटलाइन बनाना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए आपको करना क्या है, सिंपली पहले जो ये आप अगर नई नए पहली बार सुन रहे हैं लीगल वर्ड्स, तो हमेशा से क्या करिएगा, जब लीगल वर्ड आप सुनोगे उसके लीगल वर्ड शॉर्ट हैंड में जब आप लिखोगे उसके नीचे से आप एल बना के रखिएगा। शॉर्टकट के लिए वो आपको याद रहेगा कि ये लीगल वर्ड है। तो लीगल वर्ड्स अब जो बाकी आउटलाइन इसकी होगी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, आपको ग्रुप में मिलेगा इनकी आउटलाइन। मेरी हर एक डिक्टेशन में मैक्सिमम 4 से 5 लीगल मैक्सिम्स होते हैं। तो इन डिक्टेशन को स्किप करना आपके लिए बहुत नुकसान होगा। आप हमेशा से इन डिक्टेशन को प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको पहली बार इन डिक्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, सुनने में, तो आप वीडियो को सेव करके रखो, फिर से सुनो, फिर से प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये डिक्टेशंस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जो ये डिक्टेशंस होती हैं ये कोई ऐसे कॉपी कॉपी पेस्ट वाला टेक्स्ट नहीं होता है। ये हाई सीधे ऑर्डर्स होते हैं। जो भी कोर्ट में ऑर्डर निकलता है, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो या किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो, तो ये डेटा उनका है, रियल डेटा है। तो ये कोई फॉर्ज्ड वाला नहीं है, कोई कॉपी पेस्ट वाला नहीं है। तो डिक्टेशंस को बनाने में काफी मेहनत लगती है। हम आपके लिए ले आते हैं डिक्टेशन। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको फायदा मिले इन डिक्टेशन लिखने से। तो आपका भी फर्ज बनता है टू पे बैक। आपको करना क्या है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस पे कमेंट एंड लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। व्हेन यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू बैक। जैसे कि हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, प्रीवियस डिक्टेशन हमने दिए हैं, सब सबको हेल्प मिला है उनसे। मैं बहुत शुक्र करता हूँ आप सबका। आप सबने बहुत अच्छा प्यार दिया है। हर एक हमारी हर वीडियोस पे कमेंट करते हो, लाइक करते हो और ग्रुप में भी आप मैसेज करते हो, पर्सनल मैसेज भी भेजते हो। ठीक है, बहुत अच्छा है वो। तो साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और दूसरों तक भी पहुंचाओ, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनको भी इन डिक्टेशन लिखने का मौका मिले। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस डिक्टेशंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में आपको इससे भी अच्छी डिक्टेशंस देखने को मिल जाएंगी।